entangled in the material world, and I'm always free, even though I'm engaged in the usual affairs of the senses like ordinary mortals. Krishna consciousness helps me escape the result of fruitive actions, so I do not descend to the material platform. But if we renounce actions, the risk of falling to material platform is always there. So Krishna consciousness is superior to renunciation. In Bhakti Rasamrit Sindhu, Srila Rupa Goswami confirms that renunciation is incomplete without Krishna consciousness. It becomes complete when we realize that everything belongs to Krishna, so his property should be used only in his service. This is perfection in Krishna consciousness and is far superior to any artificial renunciation. If we only renounce and do not practice Krishna consciousness, we feel morose, purposeless, unhappy. But if we are Krishna conscious, we do our duties happily and simultaneously we also achieve Krishna. Such a Krishna conscious person is a Nitya Sannyasi, always a renouncer. Na dveshti, na kankshati. He feels neither hatred nor desire for the result of his actions. Only the ignorant, the childish people say Karma Yoga and Sankhya Yoga are different. The aim of Sankhya is to find the soul, the source of the material world, while the aim of Karma Yoga or Bhakti Yoga, which is devotional service, is to serve that soul. So the aim of both is Vishnu. So actually, really, there is no difference. With Sankhya, we detach from matter and attach to Krishna. With Bhakti, we directly attach to Krishna. One who understands that the two processes are different paths leading to the same destination has the right understanding. Ya pashyati, sa pashyati. Sankhya is slower, like climbing stairs, while bhakti is instant, like taking a lift. A Krishna conscious person with a pure heart and his mind and senses in control is dear to all, and all are dear to him. He sees all as Krishna's part and parcels and serves all as if he's serving Krishna. So everyone loves him. And then he loves everyone because he sees everyone as Krishna's part and parcels. So he's always engaged in loving transcendental service of Krishna and has nothing to do with any work that depends on five immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the effort, and the destiny. Activities such as seeing and hearing are meant for receiving knowledge, while moving, speaking, etc. are meant for work. A Krishna conscious person is ever aware that only senses are acting on their objects. Guna guneshu vartante. So he is never affected by the actions of the senses. He thus becomes a drishta, neither enjoying nor suffering his karma phal. A tattvavid, one who knows the real truth. A yoga yukt, always connected to Krishna, and a Vishuddhatma, a purified soul. He not only knows, but always remembers that he is Krishna's eternal servitor. According to Ishavasya Upanishad, Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat. That is, everything is full of Krishna. So everything must be used to serve Krishna. My body, my family, my home, my profession, all belong to Krishna. Every moment I do all my duties only for Krishna and offer the karma phal to Krishna in complete detachment. If I live in this way, like Arjun did, Krishna will save me from any material contamination by virtuous or sinful reactions. Krishna says, thus I will be exactly like the lotus, living in water but never getting wet. But Padma Patra Ivambasa. Living continuously in this consciousness, I will achieve perfection in Krishna consciousness. Though living in Dukhalaya world, realizing its temporariness, I will feel no dukh, but have experience of the saying, Vishwam Purnam Sukhayate. Like Krishna says in the Bhagavad Gita 1854, Brahma Bhuta Prasannatma na shochati na kankshati. When we study the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam regularly and sincerely, we remember Krishna all the time. Then it is easy to do all our actions of the body, mind,
intelligence, and the senses to serve Krishna. There are no material reactions resulting from the actions of a Krishna conscious person. According to Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrit Sindhu, a Krishna conscious person is liberated even while he is in the material world, doing his normal activities with his body, mind, and intelligence. Since a Krishna conscious person is ever aware that his body and all his possessions belong to Krishna, even though he is an insignificant part and parcel of Krishna, he becomes Krishna's special servitor and gets totally dovetailed with Krishna. Thus, Krishna helps him stay continuously in this consciousness, which is pure Krishna consciousness, and all his activities become sadachar. A Krishna conscious person is attached only to Krishna. इसीलिए वो सदा कृष्ण की शरण में, जैसे एक बच्चा सदा अपनी पिता की शरण में. A Krishna conscious person does everything for Krishna, so there is no anxiety, no fear about karma phal, like being in Vaikunt, even while living in the material world. So he is fearless and lives in perpetual peace. पर जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसे सदा कर्म फल की चिंता रहती है. वो सदा डरा और अशांत रहता है. हरि नाम जप और कृष्ण के लिए सब कर्म करे तो सब कर्म अकर्म हो जाएंगे, जिससे सारे पाप शून्य, जो कि सब दुखों का कारण है. जब दुखों का कारण ही शून्य, तो दुख भी खत्म. So when we are engaged in sense gratification, we identify with the body, which is a city of nine gates. Any little problem anywhere in the body, and we suffer so much. But when we identify with Krishna present in our heart, we become as free as him, even while living in our material bodies. This is from Shvetashvatara Upanishad. All living entities are superior energy of Krishna, whose bodies are material, that is inferior energy of Krishna. But since all living entities, since time immemorial, identify with their temporary physical bodies, they enjoy and suffer the result of the activities of their bodies. When the same living entities get connected with their source Krishna, the ignorance is over. They become transcendental and they go beyond the control of the modes of material nature and become Sat Chit Anand, like their source Krishna, even though they are still in the material world. Krishna is Vibhu, that is all knowledge, all riches, strength, fame, beauty, and renunciation, while we living beings are Anu, atomic. As our power is limited, we forget that we are Satchidanand, part and parcel of Krishna. In ignorance, we think we are the physical body, so we enjoy and suffer our karma phal. Not only that, we say that Krishna is responsible for all our joys and sorrows. Krishna is impartial to all. We suffer and enjoy as we identify with our bodies and have an infinite number of desires, thus creating more and more physical bodies. But when we start desiring Krishna, he takes special care and encourages us to desire in such a way that we attain to him and become eternally happy. When we forget him, we are confused and bewildered. But when we are Krishna conscious, there is total clarity. Krishna says in Bhagavad Gita 7:19, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mam Prapadyate. After passing through many, many births, when we are perfect in knowledge and surrender to Krishna, then everything is revealed to us just as everything is revealed by the sun in the daytime. A bona fide spiritual master is like the sun. He gives us knowledge of God and purpose of human life. Under his guidance, we will get real, perfect knowledge and become totally Krishna conscious. We learn from the Bhagavad Gita and all Vedic literature that Krishna is Paratattva, the supreme absolute truth, understood by the knowers of Supreme as Brahma, Paramatma, and Bhagavan. A Krishna conscious person has his mind, faith, intelligence, and refuge always in Krishna. So all his doubts, suspicions, all vanish
and with perfect knowledge, he makes quick progress on the path of liberation. Krishna, the Supreme Lord, is present in everyone's heart. Since a learned sage has this real knowledge, he looks at all with equal vision, be they a high caste Brahmin or an outcast dog eater, also a dog, a cow, an elephant, or any other living being. We get the bodies according to our karma, but the soul and the super soul in each body are of the same spiritual quality. The Krishna conscious sage also knows that though the soul and the super soul are both Sat Chit Anand, Anand Swarup, the individual soul is conscious within just one particular body, while the super soul Paramatma is conscious of all the bodies and is the same in all. So the sage sees all with an equal vision. Krishna is always pure, flawless, nirdvandva, as he is without attraction or hatred. A truly Krishna conscious person is some, and he sees all with equal vision. So he is also without attraction or hatred, and hence flawless like Brahma. He sees all beings as Krishna's dear children who are suffering because they are separated from their father, their source, Krishna. Since he has complete equanimity of mind, is not at all body conscious, he is mukt, liberated, or in Vaikunt, that is without anxiety, even while he is in the material world. And after death, he goes back to Godhead as if he has only changed his clothes. Krishna consciousness is a purifying process, so a truly Krishna conscious person knows that he and all living beings are spirit souls. Since he stops identifying with his body, वो सुख दुख में बहता नहीं है, पर सदा सम रहता है. This differentiation of body and soul elevates him to the position of knowing the complete science of the absolute truth, that is Brahma, Paramatma, and Bhagwan. Material sense pleasure are due to contact of the material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. Na teshu ramate buddha. A truly liberated sage has no interest in anything temporary. He is so absorbed in transcendental loving service of Krishna, knowing well its permanent, unlimited, and ever increasing joy. Now, if we want to be self realized and happy, we just have to control our senses and mind. The best, and in fact, the only way is to employ our senses, snakes, to serve Krishna, the super snake charmer. So, if we practice Krishna consciousness while in the present material body, our mind will be so pure that we'll have natural control over desire and anger, and that will make us happy and peaceful. Material happiness gives only temporary joy, making us restless and unhappy in the end. A true devotee only enjoys happiness from within that gives joy and peace to the soul. This inner joy is ever increasing without a break and without dependence on anyone or anything. This is the Brahmabhut state where the only business of the devotee is Krishna, Krishna ka naam or Krishna ka dham. A person practicing Krishna consciousness becomes free from doubts and dualities and past sins. He realizes that our sufferings are due to forgetfulness of our relationship with Krishna. So, to make all aware of this fact is the highest welfare work. Sarva Bhuta Hite Rataho. Therefore, he is ever engaged to achieve this goal rather than providing temporary relief to the body and mind of the suffering humanity. For example, he makes a crying lost child happy by finding his father rather than just feeding and clothing him. Saintly persons try many austerities to realize God. We learn from Srimad Bhagavatam that the most effective way to discipline the mind and senses is to serve the lotus feet of Krishna. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. Jivera Swarup Hoy Nitya Krishna Das. Yena Kena Prakarena. Let us become Krishna's servants rather than servant of our senses. This will easily free us from material desires and anger, leading us to automatic control
over mind and senses. Srila Prabhupada gives the appropriate example of the caterpillar dreaming of butterfly, becoming a butterfly before long. Likewise, with my mind on Krishna, even though he's far away in Golok, I will attain him very quickly. In the Kali Yuga, Hatha Yoga and Dhyan Yoga are impossible. यदि ऋषि विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या करने के बाद सतयुग में मेनका की पायल सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो where do the weaklings of Kalyug stand? So the only way to control the senses is to keep them constantly to serve their master Krishna and to chant his name without a break. Thus engaged, I can know who I am, who is God, and what is my relationship with God. When I see a beautiful woman, instead of shutting my eyes, I should see her as Radharani, Krishna's spiritual energy. A beautiful flower, I offer it at Krishna's lotus feet. So I accept everything as his blessing. My mind and senses thus purifying, I get closer and closer to Krishna. Now we come to the last verse of chapter 5. In this verse, Krishna gives the 3-point peace formula to Arjun and all of us mortals. And that is, Krishna is the supreme enjoyer, the supreme owner, and the supreme friend of all. If we know and remember these 3 points, we will always be peaceful. Krishna, as my well-wisher and closest friend, is always present in my heart, whether I'm in the body of a king or a beggar, a pig or even a blade of grass. Even if someone does not care for him, Krishna takes care that he breathes. He gets sunshine. Krishna is our Suhrid, our well-wishing friend, like none other. We are not the master or controller of anything. We must accept that all belongs to Krishna, and we as his servants should use everything to serve him. With this thought process, my lust, anger, greed, desires, in fact, all the negativity will go away at once, resulting in everlasting peace. Srila Prabhupada calls it spiritual communism. When Krishna consciousness is added to our usual material consciousness, our consciousness will become purely spiritual, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, Working in Krishna consciousness is not different from transcendental knowledge, the culmination of Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice. Not too long, I hope. No, I mean, for a summary, जो पूरे chapter की summary है उसके लिए लंबा तो होना पड़ेगा ना उसको. So, but you covered very nicely all the points. Just a couple of things. Isha Upanishad is the Upanishad that you were talking about. It's the first Upanishad. So it's Isha Upanishad. You said some other word. Okay. I'm sorry. ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं. ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं उसको. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. I was just aware कि उसको ईशोपनिषद बोलते हैं. शॉर्ट में ईशोपनिषद बोलते हैं और वैसे उसका पूरा नाम ईशावास्य उपनिषद. Okay, okay, fine, all right. Okay. Also, when we see some beautiful lady, we don't see her as Radha. We see her as an energy of Krishna. You know. Okay. Yeah. We worship Radha as our eternal mother. Okay. So that is the relationship with her. But so we see everyone as a part and parcel of Krishna, not for our enjoyment. You know, जैसे generally materialists देखते हैं हर चीज को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, है ना, लेकिन भगवान के अंग देखते हैं भक्त लोग, है ना, भगवान के भोग की वस्तु देखते हैं. Thank you. Thank you. Very nice. Very, very beautifully made summary. Very nice. Thank you so much. आपसे सीखा है जी. नहीं, आपको तो you're really blessed. Okay, Shubha ji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. बहुत समरी बहुत अच्छी थी रश्मि जी की. Beautiful. मैं पोस्ट कर देती हूँ सबके लिए. हाँ, yes, yes. Thank you so much. Hare Krishna, Reena Hare Krishna, Sonia ji Hare Krishna, Vaishali Hare Krishna. Hare Krishna, Madhadev. Hare Krishna.
Hare Krishna. Jasmine, Hari Bol. I'm so happy to see you. Sheetal, Hare Krishna. Sangeeta, हरे कृष्णा रश्मि जी। Hari Bol. वैशाली, मुझे लगा वैशाली आज की क्लास में भी नहीं आएगी कि टाइम 4:30 का सूटेबल नहीं है, यू सेड नो। संगीता, नहीं आज तो क्लास नहीं है। अच्छा ओके ओके, अच्छा माता जी। हरे कृष्णा। प्रीति, हरे कृष्णा। गीतिमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और डिवोटीज आने वाले हैं कुछ क्या? I'm expecting somebody is missing, I feel. I don't know who all are missing. Yeah, actually, I'm also checking the list, but can't find. Okay, so ध्यान योग, तो भगवान ने थोड़ा सा टच अपॉन किया था ध्यान योग के बारे में, और रश्मि आंटी ने भी अपनी समरी में कवर किया। तो अभी चैप्टर 6 में भगवान ध्यान योग को समझाने वाले हैं प्रॉपरली, बहुत इलाबोरेट तरीके से, और हमको ये चॉइस देने वाले हैं कि हम क्या इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नो, तो हम शुरू करते हैं। ओके, ओके, कोई रिपीट करना चाहेगा? वुड लाइक टू रिपीट? विमला माता जी रिपीट करेंगे। Okay. श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्य, आई एम सॉरी, अनाश्रितः कर्म फलं कार्यम् अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति या कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। नानिरग्निर्चाक्रिय। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना, कर्म फलम कर्म फल की, कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है यह जो, स वह, सन्यासी सन्यासी, च भी योगी योगी, च भी ना नहीं, नि रहित, अग्नि अग्नि, ना ना तो, च भी अक्रिय क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। आगे पढ़ूं माता जी? तात्पर्य वेट, we'll just pause here. तो जैसे आप देखते हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट भगवत गीता में ये थीम रन कर रही है कि काम करें कि नहीं करें, है ना? क्योंकि जब भगवान भक्ति के बारे में बात करते हैं तो अर्जुन को लगता है कि बस वही करना है, दैट इज इट, और ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टाइम एंड अगेन भगवान इस अर्जुन बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, और बार बार कृष्णा आंसर दे रहे हैं। तो कृष्णा ने जैसे पिछले श्लोक में 5.29 में जो टॉप मोस्ट योगी है उसकी डेफिनेशन बताई। हाँ वैशाली, मंगलाचरण कर लिया हमने। तो सो डेफिनेशन बताई टॉप मोस्ट योगी की कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान ने 3 एस्पेक्ट्स बताए ऑफ अ पर्सन, जो चुपीस फॉर्मूला है ना। और यहाँ पे भगवान शुरुआत में ही चैप्टर के वर्डिक्ट दे रहे हैं कि
जैसे एक कोई सन्यासी होता है, वो क्या सोचता है कि मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, मैं अब लिबरेटेड स्टेज में हूँ। बट यहाँ पे कृष्णा उसको क्लियर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, अग्नि नहीं जलाता, तो अग्नि नहीं जलाने का अर्थ यही होता है ना कि वो फायर सैक्रिफाइस नहीं करता, है ना। तो ये जो व्यक्ति है जो कोई ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है ना, इंक्लूडिंग द फायर सैक्रिफाइस, वो जो है वो मिस्टिक या वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन व्यक्ति है? जो who works as he is obligated in his renounced order of life, है ना। as तो what he is doing is वो अपना कार्य करता है। जैसे हमेशा हमें सिखाया गया कि हम जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहें, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को हम करें, बट डोंट बी अटैच्ड टू द फ्रूट ऑफ द वर्क, है ना। फल से आसक्त नहीं हो। तो जो अपना कार्य कर रहा है बट फल से आसक्त नहीं है, वो सन्यासी है। कृष्णा डेफिनेशन बता रहे हैं सन्यासी की, है ना। ओके, आगे चलते हैं। पढ़िए माता जी, विमला माता जी जी। जी। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। समझाएंगे? हाँ, यस समझाइए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे नहीं। सो वही डेफिनेशन जो कृष्णा ने दी है, प्रभुपाद उसको एलैबोरेट कर रहे हैं। सो जनरली वी सी, हमें मोटिवेशन ही नहीं आता काम करने का जब तक फल हमारा नहीं हो, है ना। एज इन फल से हमारी आसक्ति इज दी प्राइमरी क्वालिफिकेशन और द प्राइमरी मोटिवेशन टू बी एबल टू डू सम वर्क, है ना। बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उससे आसक्ति छोड़ दीजिए एकदम। और साथ साथ प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में बी कृष्णा कॉन्शियस while doing the activity also। तो फल से भी आसक्त नहीं होना, और प्रोसेस में भी जैसे भगवान ने बताया माम अनुस्मरा युद्ध च, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया। ऐसा नहीं बोला कि युद्ध छोड़ दो, हिमालय पे चले जाओ, चैंटिंग करो, नहीं बोला। भगवान ने बोला माम अनुस्मरा युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए आप युद्ध करो। प्रभुपाद हमेशा बहुत अच्छी एनालॉजीज देते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ पे एनालॉजी, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सपोज्ड टू सर्व द बॉडी, दे कांट बी एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, है ना, दे कांट बी हैप्पी। तो उसी प्रकार से हम अभी तक जो हैप्पीनेस डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, वो उस प्रकार से डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक फीडिंग रसगुल्ला टू द हैंड, है ना, बट can't be happy, है ना। Only when the rasgulla goes in from the mouth, so the process is also there, like from the guru we get bhakti, है ना। तो from the mouth to the stomach it goes, and then the whole body enjoys the rasgulla, gets the energy from food. Similarly, we have to have
it has to be very clear in our minds that directly we cannot enjoy anything. It has to come via Krishna, because Krishna is the enjoyer. And when Krishna enjoys, because we are parts and parcels of Krishna, we enjoy because Krishna is enjoying. So directly we cannot enjoy. So, and only there's one, although there's so many holes in the body, the 9 holes in the body, but food can be taken through only one hole, which is the mouth. So similarly, only by Krishna Bhakti can we, actually satisfy ourselves, first thing. And the process of Krishna Bhakti is also categorically defined. You have to belong to a parampara. You have to take shelter of a guru. And through that only you can satisfy yourself with pure bhakti. Is that okay, Vimla Mataji? Yes, nice. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की तवी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरि बोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस इंडीड। तो प्रभुपाद ने बताया है, तो ये बात तो हमें क्लियर है पहले वाले पैराग्राफ से कि अपने आत्मेंद्र, अगर हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है ना। इट इज ओनली वाया कृष्णा कि हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, यानी जिनको हम मायावादी भी बोलते हैं या निर्विशेषवादी बोलते हैं, तो वो भी एक्चुअली अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाहते हैं, है ना। अगर आप देखें ट्रांसेंडेंटलिस्ट 3 कैटेगरी के होते हैं ना। ट्रांसेंडेंटलिस्ट माने जो भी आत्मा को जानना चाहते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो अपने आप को आत्मा मानते हैं और भगवान को ब्रह्म मानते हैं या एनर्जी मानते हैं और उसमें मर्ज होना चाहते हैं। तो अगर उनको देखा जाए तो वो भी बहुत सेल्फिश हैं। दे आर ओनली लुकिंग फॉर देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ मटेरियल लाइफ। ये बात उनको समझ में आ गई कि मटेरियल लाइफ इज फुल ऑफ misery. Now what I need to do is I need to finish this material existence and merge into Brahm. तो ये क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है ना। Are they looking for someone else's pleasure or their own pleasure? किसका प्लेजर खोज रहे हैं? ओन प्लेजर, राइट, है ना। तो उसी कैटेगरी में आ गए, है ना। दूसरे प्रकार के व्यक्ति, दूसरे प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट, हाँ, कौन है? परमात्मावादी, जो पूरा प्रोसेस, जैसे योगा का प्रोसेस इसमें सिखाया जाएगा, है ना, हठ योग का प्रोसेस। तो हठ योग का प्रोसेस करते हैं और परमात्मा पे फोकस करते हैं और वो अपनी मटेरियल एक्टिविटीज को खत्म कर देते हैं और इसके बियॉन्ड, बॉडी के बियॉन्ड जो है सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो सिद्धियों से वो
छोटे हो सकते हैं और जैसे की होल है ना उसके अंदर से निकल सकते हैं, हाँ, या एकदम हल्के हो सकते हैं जैसे पंख के समान, ऊपर से कोई नीचे फेंके तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो सो अनिमा लघिमा, सो मेनी सिद्धि ज्यादा है। सो परमात्मावादी जो परमात्मा पे फोकस कर रहे हैं, आर दे लुकिंग फॉर देयर ओन प्लेजर और समवन एल्सेस प्लेजर? Their own only. Their own only. Nobody is worried about God's pleasure here, है ना। पर भक्त को देखिए, है ना, भक्त किस लिए काम कर रहा है? भक्त एक ही चीज के लिए काम कर रहा है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, है ना। तो आप ये फर्क देख सकते हैं कि उसको केवल हर एक्टिविटी का करने का उसका मापदंड या पैरामीटर या यार्डस्टिक ये रहता है कि क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। इफ आई डू दिस एक्टिविटी, विल कृष्णा विल बी प्लीज और नॉट? सो लाइक चैतन्य महाप्रभु ही सेइंग, भक्त का मूड क्या होना चाहिए? ना धनम, न जनम, न सुंदरीम। आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, हाँ, नीदर डू आई वांट धन, ना कोई अच्छे परिवार में जन्म या सौंदर्य, हाँ, ब्यूटीफुल विमेन, मेनी फॉलोअर्स, हाँ, बट एक ही चीज भक्त क्या मांगता है? भक्त का डिजायर क्या होता है? भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, हाँ, in all the births, I just want one thing, your devotional service. अहेतुकी, है ना, causeless. अहेतु मतलब I should not have any purpose, as in I should not have any other desire but to please you, that's all, है ना। तो भक्त ये मांग रहा है। क्योंकि आप देखिए बाकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट, दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। सो दे आर नॉट रियली इन द राइट सेंस ट्रांसेंडेंटलिस्ट, है ना। तो हम अभी प्रभुपाद का लेक्चर आपके साथ शेयर करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। यस, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन हुए जो कि दे आर लुकिंग? थर्ड कौन हुए? डिवोटीज हो गए ना, डिवोटीज, ठीक है। हाँ। Okay. Acha. So, Reena, would you like to read from here? Yes, ma'am. देख पा रहे हैं आप लोग? Yeah. From where, Mataji? The sannyasis? I have highlighted. Okay, thank you. Prabhupada, there are some yagyas to be performed by everyone for purification. So a sannyasi does not require to perform the yagyas. So by stopping that ritualistic performance of yagya, sometimes they think that they are liberated. But actually, unless he comes to the standard platform of Krishna consciousness, there is no question of liberation. Go on. Devotees, actually, they are self-interested because their goal is to become one with the impersonal Brahm. Prabhupada, yes, there is demand. The impersonalists, they had got one demand, that to become one with the supreme impersonal being. But a devotee has no demand. He simply engages himself to serve Krishna for the satisfaction of Krishna. They do not want anything in return. This is pure devotion. Just like Lord Chaitanya said, Na dhanam na janam, na sundarim kavitam va jagdish kame. Chaitanya Charitamrita Antalila 20.29, Shikshashtakam 4. I do not want any wealth. I do not want any number of followers. I do not want any nice wife. Simply let me be engaged in your service. That's all. This is the Bhakti Yoga system. When Prahlad Maharaj was asked by Lord Narasimhadev, my dear boy, you have suffered for me so much. So whatever you want, you ask for it. So he refused. My dear master, I am not doing
mercantile business with you, that I will take some remuneration from you for my service. This is pure devotion. So yogis or the jnanis, they are demanding that they should become one with the Supreme. Why one with the Supreme? Because they have got bitter experience by the separation of material pangs. But a devotee has no such things. The devotee remains, although separate from the Lord, he is fully enjoying in the service of Lord. ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया प्रहलाद महाराज का, है ना। तो जैसे हमने बताया कि इम्पर्सनलिस्ट और योगीज वो लोग एक्चुअली अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन देख रहे हैं कि उन्हें क्या आनंद देता है, बट प्रहलाद महाराज ने कितनी यातनाएं झेली थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब भगवान ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई आपसे बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, है ना। जनरली हमें शुरुआत से जब भी कुछ भी रिचुअल किया जाता है या नवरात्र करते हैं लोग या कोई फास्टिंग करते हैं, जनरली क्या होता है कि इंटेंशन क्या रहता है कि मेरा कुछ डिजायर फुलफिल हो, है ना, तो मैं व्रत कर रही हूँ, है ना। तो शुरू से ऐसे सिखाया गया, बट दैट इज नॉट प्योर डिवोशन। दैट इज, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना, बिजनेस हो गया, मर्केंटाइल बिजनेस हो गया, है ना। इस हाथ ले दूसरा हाथ दे, तो ये भक्ति नहीं है। और भक्ति क्या है? जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आई जस्ट लव यू बिकॉज आई लव यू, देयर इज नो कंडीशन टू इट। So devotee, although he's fully like Prahlad Maharaj ko aap dekhiye, in spite of so much difficulty that he went through, he was still a happy person, है ना। Why? Because he was constantly in touch with the Lord through remembrance. वो स्मरणम के आचार्य हैं, हाँ। Okay, आगे पढ़ते हैं। Reena, please continue. Yes, ma'am. So, such devotee, such a desire is greater than any material desire, but it is not without self-interest. Similarly, the mystic yogi who practices the yoga system with half open eye, seizing all material activities, desire some satisfaction for his personal self. Prabhupada, actually the yogis want some material power. This is the perfection of yoga. Not perfection, that is one of the procedures. Just like if you are actually practicing the regulative principles of yoga, then you can get 8 kind of perfection. You can become lighter than the cotton swab. You can become heavier than the stone. You can get anything, whatever you like immediately. Sometimes you can even create a planet. Such powerful yogis are there. Vishwamitra Yogi, he did it actually. He wanted to get man from palm tree. Why man? Yogis are so. Why man should be? Begotten. Why man should be begotten living 10 months within the womb of mother? They will produce just like fruit. He did it like that. So sometimes yogis are so powerful, they can do. So these are all material powers. Such yogis, they are also vanquished. How long can you remain on this material powers? So bhakti yogis, they do not want anything such. Yes. Prabhu, Yeah. हाँ, just wait. So जैसे हमने बोला अष्ट सिद्धि, है ना, 8 प्रकार की सिद्धि उन्हें चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि विश्वामित्र जो योगा कर रहे थे, हाँ, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक सिद्धि प्राप्त की, जिससे कि वो एक पाम ट्री से, खजूर के पेड़ से वो मनुष्य उत्पन्न कर सकते थे। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि क्यों 9 महीने माँ के गर्भ में रहेंगे, फल की तरह क्यों नहीं उत्पन्न हो सकते। सो ऐसी मटेरियल पावर्स के लिए लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, परमात्मा पे फोकस करते हैं। सो दे एक्चुअली सेल्फ इंटरेस्ट है ना। ओके, डिवोटी पढ़िए।
devotee, but a person acting in Krishna consciousness work for the satisfaction of the whole without self-interest. A Krishna conscious person has no desire for self-satisfaction. His cri- 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 Criteria. his criterion is the satisfaction of Krishna, and thus he is the perfect sannyasi or perfect yogi. Lord Chaitanya, the highest Perfectional. perfectional symbol of Krishna consciousness, prays in this way: O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor to enjoy beautiful women. Neither do I want any number of followers. What I want only is the causeless mercy of your devotional service in my life, birth after birth. Yes. Prabhupada. Yes. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्त है उसका क्या मूड होना चाहिए. आप देख सकते हैं he is not even asking that he wants to go back to Krishna, है ना. वो यहाँ तक नहीं मांग रहा है कि वो भगवान के धाम जाना चाहता है. जैसे जिस स्थिति में कृष्ण आप मुझे रखना चाहते हो मैं उस स्थिति में रहूंगा. हाँ, so that is the pure devotee's feeling, you know. अभी जैसे हम लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, obviously we are all new practicing bhakti, so हमारा क्या motivation रहता है कि yes, you know, we have to go back to Krishna, and which is not wrong, है ना. ऐसा नहीं कि वो गलत है, क्योंकि भगवान का डिजायर भी वही है ना. एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं भगवान के डिजायर से अपना डिजायर को मैच कर रहे हैं. पहले तो ये डिजायर भी नहीं था, है ना. तो ये बहुत बड़ी बात है बोलना. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बर्थ आफ्टर बर्थ आई जस्ट वांट टू सर्व यू, है ना, विदाउट एनी डिजायर्स. सो दैट इज the realization of the pure devotee, क्योंकि pure devotee he always resides with Krishna. So तो जब वो भगवान के साथ रिसाइड कर रहा है, भगवान उसको सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं. हाँ, अगर वो यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रखें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाएं, है ना. बताया प्रभुपाद एक दो बार शेयर किए अपने डिसाइपल्स के साथ. तो वो उन्होंने बोला था कि कृष्णा ने बोला हम लोग खेल रहे थे और कृष्णा ने बोला कि तुमको मटेरियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा. तो प्रभुपाद बोले कि व्हाटएवर, ग्वाल बाल के फॉर्म में होंगे प्रभुपाद, है ना. तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा सकता मटेरियल वर्ल्ड में, मैं गोस्वामी की तरह नहीं रह सकता हूँ. तो कृष्णा ने उनसे कहा कि तुमको ज्यादा कुछ ऑस्टेरिटी नहीं करनी पड़ेगी, तुमको खाली जाके बहुत सारे ग्रंथों की रचना करनी है ना. और ग्रंथों की रचना करके आप आ जाना वापस. So a couple of times Prabhupada mentioned his Swarupa. जैसे एक बार he was taking a massage and the sun was there, sun was shining, and he told his disciple, that golden color of the sun that you see, that golden sheen of the sun that you see, वो मेरा color है spiritual world में. Like that a couple of times. प्रभुपाद के डिसाइपल्स के लेक्चर सुनो ना तो वो केवल प्रभुपाद की बात करते हैं. इट्स सो अमेजिंग. अच्छा, जैसे सुबह भागवतम का हरिशौरी प्रभु का लेक्चर था आज सुबह का. सो वो नेचुरली दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रभुपाद. सो हरिशौरी प्रभु ने अपने एक लेक्चर में बताया था कि दैट कलर इज माय कलर, प्रभुपाद सेड. सो जो शुद्ध भक्त है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भगवान के साथ है ना. और यहाँ पे भी एक बार भक्ति चारू महाराज ने प्रभुपाद को लेटर लिखा या बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि जब आप अकेले थे उस समय, जब आप आए थे 1967 में न्यूयॉर्क आए थे और आप अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, आई रियली विश आई वाज विद यू, यू नो, like that. So Prabhupada told him or wrote back to him, he said, no, I was never alone, Krishna was with me. So, you know, pure devotee resides with Krishna all the time. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता. When he says, when the pure devotee is saying birth after birth, मुझे जन्म जन्मनी, है ना, मुझे भवताद भक्ति रहितु की तोई, आपकी हेतु की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. Because the pure devotee resides with Krishna all the time. We should pray to these pure devotees कि हम भी कभी ऐसे शुद्ध भक्त बन जाएं कि हमें
ये आभास हो, कृष्ण प्रेम का आभास हो हर क्षण, जिससे कि इवन वी कैन से लाइक दिस, जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, so that's a very high standard, but we should pray for such pure devotion that Krishna wherever, because when you love someone, for him, for the person you love so much, उसके लिए तो आप कुछ भी करने को तैयार हो ना, फिर वो आपको सेवा में अर्थ प्लैनेट पे रखे या वैकुंठ लोक लेके चला जाए या गोलोक वृंदावन लेके चला जाए, है ना. सो इट्स अप टू यू, जस्ट गिव योरसेल्फ टू हिम. So that is the mood of a pure devotee. And this is what is called complete surrender. Yes, yes, complete surrender. Yes, very nice. Yeah. Okay, please continue. Prabhupada, so a devotee does not want even salvation. Why Lord Chaitanya says birth after birth? The salvationist, they want to stop the voidist. They want to stop this material way of life. But Chaitanya Mahaprabhu says birth after birth. That means he is prepared to undergo all kind of material pangs, birth after birth. But what he wants, he simply wants to be engaged in the service of the Lord. That is the perfectional. I think you can stop. Devotee. Prabhupada, you said that spirit soul is 1/10,000 the tip of a hair in the spiritual sky. Is the spirit soul still just that big? Prabhupada, that is his constitutional position, either in the spiritual sky or material sky. He is the same. But as you develop in the material world, just wait, please. I'm just thinking a question. बाहर से है, मतलब we'll just stick to the topic. Okay, we'll read this. Someone, कोई और पढ़ना चाहता है? Jasmine, आप पढ़ सकते हो? Sure, Rashmini, I'll read it. Okay. So, Prabhupada. Yeah. Okay. We have finished the 5th chapter of Bhagavad Gita. Today we shall begin the 6th chapter. In 6th chapter, you'll find the process of yoga. You have heard many times of the yoga system. That yoga system is approved by Bhagavad Gita. But the system of yoga as prescribed in Bhagavad Gita is it is specially meant for purifying your status. Karma Sudhya. Vijitatmanah. Yeah. You can just read the English. No? Okay. Karma, a process of our, to control the senses and to purify the process of work. That is the purpose of yoga. Yoga means to purify the process of our activities and to control the senses. Shri Bhagwan Vacha. Okay. Where was it? Bhagavan. The other day Bhagwan. The other day we have explained who is Bhagwan. Bhagwan is the last word of the absolute truth. The absolute truth is realized in 3 phases: impersonal Brahman, localized Paramatma, super soul, and ultimately as the supreme personality of Godhead. Ultimately, Bhagwan or the super absolute truth is person, and secondarily, he is all
pervading super soul, and the Brahma Jyoti effulgence. So here it is said, Sri Bhagwan Vacha. Bhagwan means the proprietor of everything and all powerful. All, all. He has got all famous. Nobody can be more famous than God, and all beautiful, and full of knowledge, and full of renunciation, full of opulence, at the same time full of renunciation. Here in the material world, you'll find if a rich man has got great opulence, he's not like he is not liking to give it up. He's not liking. He does not like to renounce. But in the supreme personality of Godhead, you'll find full of opulence, full of all opulence, but at the same time full of renunciation. The six qualifications: proprietor of all opulence, all famous, all strength, all beauty, all knowledge, and all renunciation. Any Anywhere you will find all these six qualifications in full. He is the supreme personality of Godhead. So here it is said, Sri Bhagwan Vacha, the supreme personality of Godhead is speaking. He's speaking means he's speaking with all knowledge. His knowledge has no flaw. Our knowledge has so many flaws. We commit mistake, we are illusioned. Sometimes we speak something and at our heart there is something else. That means we cheat. And our experience all imperfect because of our senses are imperfect. Therefore, I cannot speak anything to you. If you ask me, Swamiji, uh, Then what you're speaking? then what you're speaking? I am speaking simply what the Supreme Personality of Godhead has said. I'm just repeating the same words. That's all. Don't think that I am speaking. I am simply instrument. Real speaker is the Supreme Personality of Godhead, who is without and within. So Okay, we'll what, just pause here. what does he So we'll just pause here. तो प्रभुपाद ने इस वाले अपने लेक्चर में पहले, क्योंकि श्री भगवान उवाचा उसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों कृष्ण को भगवान बोला जाता है, क्योंकि 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्णतया केवल कृष्ण में ही पाए जाते हैं और किसी व्यक्ति में नहीं पाए जाते, इसलिए उनको श्री भगवान बोला जाता है। और ये भी बताया कि हमारे अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं। हाँ, हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, हम चीट करते हैं। जो हम बोल रहे हैं, हमने आपको एक्रोनिम भी दिया था ना, MISC। हाँ, सोनालिका प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। सो जो 4 प्रकार के हमारे अंदर हम मिस्टेक्स करते हैं, हम इल्यूजन हो जाते हैं, हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, हम चीट करते हैं, ये हमारे अंदर जो गलतियां हैं वो भगवान के अंदर नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई पूछे कि आप भी तो बोल रहे हैं आप मनुष्य हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं क्योंकि भगवान को रिपीट कर रहा हूँ, अधिकार केवल एक व्यक्ति को बोलने का है, भगवान को, है ना। और मैं अगर भगवान को रिपीट कर रहा हूँ तो मेरी वाणी परफेक्ट है, अगर मैं कुछ अपना मनगढ़ंत बोल रहा हूँ तो मेरी वाणी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि प्रचार करते समय हम हमेशा, जैसे प्रभुपाद कोट करते हैं ना, हर बार एक किसी उपनिषद से या फिर किसी पुराण से हमेशा वो बताते हैं, एविडेंस लेके, है ना, बताते हैं ना। जैसे एक लॉयर होता है, वो जब भी कुछ कोट करता है तो वो फलाने केस का रेफरेंस देता है या फलानी दफा का रेफरेंस दे देता है लॉ बुक में से। तो वैसे ही प्रभुपाद, क्योंकि शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो आप देखेंगे हर परपॉट में जो प्रभुपाद ने बोला वो बेसलेस नहीं है ना। ऐसा नहीं कि खुद से बोल रहे, हमेशा कोट किया, ये श्लोक है। इनफैक्ट कई बार श्लोक कोट नहीं भी किए होते,
है ना, उसके बावजूद भी आप देखोगे कि वो आपको कहीं कहीं श्रीमद् भागवतम में वो श्लोक मिल जाएगा या आगे भगवत गीता में कहीं मिल जाएगा. सो प्रभुपाद ऑलवेज स्पीक्स सो दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू मिस्टेक्स. तो ये इसमें एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने. So Prabhupada has broken down this shloka. He's saying anashrita karma phalam jaise tha. Anashrita matlab without any shelter. Karma phalam. Everyone is working expecting some result. Whatever you do, you expect some result. Anashrit karma phalam matlab karm phal ki का आश्रय नहीं लिया, है ना. Anyone who works without any shelter of result, he works. So then if he does not expect any result, then why does he work? Unless, suppose I ask someone to work this way, then he will expect something, some result, some remuneration, some reward, or some salary. That is the way of working here. But Krishna prescribes that anashrita karma phalam, one who works without any expectation of result or reward. Then why does he work? Karyam, it's my duty. It's my duty, not with the result, but as duty. I am duty bound to do this. Karyam karma karoti ya. In this way, in such a way, if somebody works, sa sannyasi, he is actually in the renounced order of life. Okay, we can continue, I think. Jasmine, please continue. रश्मि जी, हाँ, वैशाली. इसमें एक ये था, the absolute truth is realized in 3 phases. Impersonal Brahman, localized Paramatma. So what is localized Paramatma? Paramatma, localized as in he is present in the heart of everyone. So he is locally present in the heart of everyone. Localized means he's staying in the heart, basically. Okay. है ना? ठीक है. Thank you. Yeah, thank you. So excuse me, why is a yogi called Paramatmavadi? Because he's the entire process of Hatha Yoga or this process of Dhyan Yoga, it is based on focusing your mind and senses on the heart, on the Paramatma in the heart. है ना? अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल कि वो कैसे करते हैं. प्रभुपाद ने थोड़ा सा बताया इसमें. Thank you. Yeah, thank you. Okay, please continue. There are 4 stages of life according to Vedic culture. We have many times explained to you the brahmachari. Rashmi, what's the next word? Grihastha, Vanapastha, and sannyasi. Yeah. Brahmachari. Means student life, to be trained up in spiritual understanding, Krishna consciousness, fully trained up. He is called brahmachari. Then after full training, he accepts wife. He gets himself married and lives with family and children. That is called grihastha. And then after 50 years, he leaves the children alone and gets out of home accompanied by his wife and travels in holy places. This is called vanaprastha, retired life. And the last, he gives up his wife to care of his children, grown-up children, and he remains alone. And this is called sannyasa, or renounced order of life. So these are 4 orders of life. Now Krishna says that simply renouncement is not all. Simply renouncement is not all. There must be some duty. Karyam means it's my duty. Now, what is that duty? He has renounced the family life. He has no more botheration how to maintain his wife and children. Then what is his duty? The duty is very responsible duty to work for Krishna. Karyam means it is the real duty. There are 2 kinds of duties in our life. One duty is to serve the illusion, and another duty is to serve the reality. When you serve the reality, that is called real sannyasa. And when we serve the illusion, that is called maya. Now, either to serve the reality or to serve the illusion, I am
in such a position that I have to serve. My position is not to become the master, but to become the servant. That is my constitution. Everyone in this material world, he's a servant. Nobody is a master. One thinks that I am the master, but he is actually a servant. Suppose if you have got your family, if you're thinking that you are the master of your wife, of your children, of your servants, of your business, that is false. You are the servant of your wife. You are the servant of your children. You're the servant of your servants. Um, that is your real position. Any case you take, the president, he's considered to be the master of the country, but actually he's the servant of your country. So if you go analyzing that our position is always servant, so either we shall become the servant of illusion, or we shall have to become the servant of God. But if we remain the servant of illusion, then our life is wasted. Everyone is the servant of illusion. He's servant of nobody but servant of illusion. He is expecting some profit for serving, he is expecting some profit, but that is transient and illusion. Therefore, uh, he is the servant of illusion. And when a person becomes uh, becomes to his real senses, transcendental senses, or or Jnanam. jnanam, jnanam. Uh, when he becomes actually the person in knowledge, then he becomes the servant of the reality. Because I am a servant always, this way or that way. So knowledge means then Why shall I serve the unreal illusion? then why shall I serve the unreal illusion? Let me serve. Let me serve the reality. If my business is to serve and nothing to be, never to be the master, always to serve, then why shall I serve the illusion? Let me serve the reality. That sense is called knowledge. So, anas, Anashrit karma phal. uh, anashat karm phal. Sannyasa renounced order of life means one who is in perfect knowledge, he can take sannyasa. Otherwise, he is if he takes all of a sudden the renounced order of life, he will create misery for himself and misery for others. In full knowledge, that sannyasa. So here, how that full knowledge is exhibited after sannyasa, and that is explained here by the Supreme Personality of Godhead. What what is that? Karyam. It is my duty to become Krishna conscious and to serve the cause of Krishna. Oh, Just that's my pause duty. here. We'll just pause here, है ना? So आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद ने केवल जो पहली लाइन है ना? अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति या को एक्सप्लेन किया इतना सुंदर तरीके से. सो प्रभुपाद एक्सप्लेन कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है ना? तो 4 आश्रमों के बारे में बताया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, है ना? तो सन्यास क्या है ना? तो स्पेशली अगर आप देखेंगे, स्क्रिप्चर्स आल्सो टेल अस कि सन्यास केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है ना? वैश्य नहीं करते सन्यास, है ना? वो वानप्रस्थ तक रहते हैं. और शूद्रों के लिए तो केवल गृहस्थ तक ही है ना? सो नॉट एवरीबडी कैन बिकम सन्यासी. बट व्हाट इज सन्यास? सन्यास इज अ मेंटालिटी, है ना? चेतना है सन्यास. तो सन्यासी की क्या चेतना है? अनाश्रित कर्म फल, है ना? ही इज नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज,
है ना। जनरली जो हमारा मोटिवेशन क्या होता है, हम कोई कार्य करते हैं तो उसका केवल हमारा रिजल्ट क्या है उस पे हम आश्रित होते हैं, उसी से हमारी जिंदगी चलती है ना। लेकिन दिस पर्सन इज नॉट, व्हाई इज ही डूइंग दैट? Prabhupada is asking, he is not worried about the result, then why is he doing? Just because it's his duty, है ना, just for the sake of duty. And then कोई कहेगा मैं ड्यूटी क्यों करूं अपनी, हाँ, I am the master, why should I do this? Prabhupada is saying everybody is a servant, है ना। जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, जैसे नमक का धर्म क्या है, नमकीन होना, चीनी का धर्म मीठा होना है, पानी का धर्म है तरलता या लिक्विड होना, है ना। वैसे ही जीव का धर्म ही है सर्वेंट होना, है ना। हम अपनी लाइव्स में झांक के देखें, वी आर सर्विंग अदर्स ओनली, है ना। The husband might say he is the boss of the house, but he is actually working hard to serve his boss in the office and serve his family at home. He's a servant. Prime Minister or the president is serving the country. Everybody is serving. So नौकर तो सब लोग हैं। अब ये देखना है कि किसका नौकर बनना है, माया की नौकरी करनी है कि भगवान की नौकरी करनी है। नौकर तो स्वरूप है हमारा, तो हमारे पास चॉइस है कि हम अपने करंट जीवन में केवल अपनी चेतना चेंज करके हम माया की नौकरी से हटकर भगवान के नौकर बन सकते हैं, है ना। और वो तब होगा जब हम भगवान क्या चाहते हैं वो जानेंगे, तभी तो उनकी सेवा कर पाएंगे ना। जैसे सपोज मुझे पता ही नहीं हो कि शिवेंद्र आंटी को क्या खाने में अच्छा लगता है और मैं उनके लिए कुछ बना के ले जाऊं, पर उन्हें वो पसंद ही नहीं है, तो पहले जानना पड़ेगा। इफ आई वांट टू कुक फॉर शिवेंद्र आंटी, आई मस्ट नो व्हाट शी लाइक्स। Similarly, I should know what Krishna wants from me, what Krishna expects from me, and then work. So फल तो है उसका, है ना, फल मेरे लिए नहीं है ना। जब मैं बोलती हूँ कि मैं आश्रय नहीं ले रही हूँ फल का, तो मेरे लिए क्या फल है कि उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना। और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो मेरा जो संबंध है कृष्ण के साथ, जो मैं कितने कितने जन्म से भूल गई, है ना, वो मुझे स्मरण होगा। धीरे धीरे सेवा से संबंध की स्थापना होती है, सब लोग जानते हैं ना, सब लोग, एवरीबडी एग्रीज टू इट, राइट। व्हेन वी सर्व समवन वी बिल्ड अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, इजंट इट। प्रभुपाद कई बार एग्जांपल दिया करते थे कि जैसे पहले जमाने में बच्चों की जल्दी शादी कर देते थे, लेकिन गौना नहीं होता था उस समय, as in the wife used to be at her place, husband used to be at his place, but kabhi kabhi after they were 12 years old, the girl was supposed to cook something and bring it to and give it to her husband, तो धीरे धीरे सेवा सेवा करते करते प्रेम का संबंध establish हो जाता था, है ना। तो वैसे अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो प्रेम का संबंध वापस स्थापन हो जाएगा। तो ये फल है ना, ये फल हमें मिल रहा है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा से। बट कोई भौतिक फल की इच्छा या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा का आश्रय ना लें। किस लिए कर्म करें, तो उसमें ये बात भी आ जाएगी, हो सकता है मुझे कुछ चीजें अच्छी ना लगती हूँ, है ना, फिर भी मैं वो चीज करूंगी, है ना, क्योंकि उससे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, उससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। सो तो ज्ञान क्या है कि सन्यासी बनने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। तो ज्ञान क्या है कि ये जो ज्ञान, उस ज्ञान के ही बल पर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये माया है, हाँ, और ये कृष्ण है, और मुझे क्या करना है, मुझे माया की सेवा से हट के मुझे कृष्ण की सेवा में जाना है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। सो ओके, दिस वी डिडंट रीड, राइट। So sannyas, renounced order of life, means one who is in perfect knowledge, है ना। तो otherwise, if he takes all of a sudden to the renounced order of life, he'll create misery for himself and misery for others. In full knowledge, that's sannyas. So here, how that full knowledge is exhibited after sannyas, that is explained by Supreme Personality of Godhead. What is that karyam? It is my duty to become Krishna consciousness and serve the cause of Krishna. No?
So after many, many births, when a soul is perfectly elevated to the platform of real knowledge, transcendental knowledge, then what does he do? He surrenders unto me. Huh? But Krishna says, "Sa Mahatma Sudurlabha Bahunam Janmanamante." So you can see sannyas is not leaving work. It is always, again, Prabhupada is reiterating that it is my duty. I'm not forced, but voluntarily, out of love, transcendental love. Just like a mother serves the child is out of love. There's no question of salary or remuneration. It's okay. Okay, we'll just pause here, I think. It's already 5:30. Okay. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और हमें इसको मनन करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें कैसे कैसे कार्य कर। भगवान ने ये बताया कि जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि भक्ति तब कर लेंगे जब 60-70 साल के उम्र के हो जाएंगे, फिर कोई घर का काम नहीं होगा, तब कर लेंगे। लेकिन आप देखिए हमारे मूवमेंट में ही देखिए 25 साल के लोग, they've taken up this process, and even younger. I know so many god sisters जो 18-17 साल की उम्र में उनका दीक्षा हुई। तो ऐसा नहीं है कि हमें कार्य करना छोड़ना है, कार्य करने के साथ साथ, हमारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के साथ साथ ही हमें भक्ति करनी है। हमें मालूम नहीं ना कब हमारा शरीर छूट जाए, है ना। तो yeah, so this is a very important shloka. And you have any questions or comments? Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Yes. Yes, Mataji. I have